Dear students, today we are going to understand part 2 of class 8 science, that is chapter number 6, conservation of biodiversity. In today's part, we are going to understand about the causes and consequences of deforestation. And my dear students, in every part of the lesson explanation, we'll be doing some exercise questions. In previous part, we have question number 1 and 2, and today in this part, we will be there doing question number 3 and 4. So before we move further, before we understand, just watch this video. Forests cover about 30% of the planet, and the ecosystems they create play an essential role in supporting life on Earth. But deforestation is clearing Earth's forests on a massive scale, and at the current rate of destruction, the world's rainforests could completely disappear within 100 years. Why should we care about deforestation? Together, forestry and agriculture are responsible for 24% of greenhouse gas emissions, making deforestation a significant contributor to climate change. Deforestation impacts the amount of greenhouse gases in the atmosphere in two ways. First, when trees are felled, they release the carbon they are storing into the atmosphere. Second, trees play a critical role in absorbing the greenhouse gases that fuel global warming. Fewer forests mean larger amounts of greenhouse gases entering the atmosphere, and increased speed and severity of global warming. In addition to helping regulate the Earth's climate, forests provide habitats for over 80% of the plants and animals that live on land. But deforestation destroys these habitats, diminishing biodiversity. Some estimate that 4,000 to 6,000 rainforest species go extinct each year. This also affects the more than 2 billion people who rely on forests as sources of food and shelter. The biggest driver of deforestation is agriculture. Farmers chop down trees in order to plant crops like soybeans, palm trees, and cocoa, or to make room to raise livestock for beef. Logging operations, which provide the world's wood and paper products, also cut countless trees each year. Forests are also destroyed as a result of growing urban sprawl as land is developed for dwellings. The effects of deforestation are grave, but not irreversible. Efforts such as managing forest resources, eliminating clear-cutting, and planting new trees to replace those removed are already being made to reduce deforestation's environmental impact on our planet. And while some plant and animal species are gone forever, combating deforestation can help prevent further loss of biodiversity. You have understood the video, आपकी समझ में आया होगा. So, क्या चीजें हैं, कैसे causes हैं और causes जो deforestation कर रहे हैं या और उसके क्या consequences हैं. So now we will understand it chapter wise. Okay. First thing is causes of deforestation. किस वजह से, क्या कारण है कि deforestation या इतने ज़्यादा पेड़ काटने पड़ रहे हैं. So having learned about the causes of the loss of biodiversity, you can now easily understand the causes of deforestation. तो हमने जब जैसे कि loss of biodiversity के बारे में पिछले पार्ट में समझा है, तो हम आसानी से causes के बारे में भी जान सकते हैं. So forests are an important natural resources. They are essential for the well-being and survival of mankind. जो forest है, वो एक natural resource है किसके लिए, ह्यूमन काइंड के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए. उनको उनकी ज़रूरतों की चीज़ें, उनके जो ऑक्सीजन है या उनके लिए जो फूड का प्रबंध हो रहा है, अवेलेबिलिटी हो रही है, तो ये फॉरेस्ट की वजह से हो रही है. और फॉरेस्ट एक्ट करता है एज ए नेचुरल रिसोर्स. Then, however, due to various human needs, forests are under great threat of being cut. लेकिन इन्हीं ज़रूरतों की वजह से क्या है कि फॉरेस्ट तो सबसे ज्यादा खतरा है काटे जाने का, that is deforestation. Various mankind causes of deforestation are construction of houses and industries,
clearing land for agriculture purposes, using wood as fuel, using wood to make paper, furniture and other things. So पहला कि जो man-made causes है, कई man-made causes है, घर बनाने के लिए या इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए पेड़ काटे जाते हैं. In previous part, someone has asked about what is industrialization and urbanization. Industrialization is basically you have a land and you want to put up a factory over there. आप फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, ठीक है. तो उसके लिए क्या करोगे, वो लैंड पे अगर इफ देयर आर सम प्लांट्स, देयर आर सम ट्रीज, यू विल क्लियर इट. सबसे पहले काटोगे, क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता है. तो पेड़ काटोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे. डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ पे जानवर या पक्षी रहते हैं उनको हम लॉस कर रहे हैं. ओके. अब उस इंडस्ट्री में सिर्फ इंडस्ट्री नहीं होगी, अब वो इंडस्ट्री से पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए होगा. सो यू आर मेकिंग इट मोर क्लियर. अब वहाँ पे जो लेबर आएंगे तो कोई 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर से नहीं आएंगे. दे हैव टू बी प्लेस्ड नियर द इंडस्ट्री. ओके. So such a kind of thing is industrialization. Okay. So just for example, uh, not in UP but in Uttarakhand, we have Sidgul in Rudapur and one place is Sitarganj. If you have gone to Nanapata, you will be knowing that. Near Sitarganj, the Sidgul area is there. It was all forest land. पेड़ पौधे लगे हुए थे. इंडस्ट्रीज को वहां पे स्टैब्लिश करने के लिए उन सारे पेड़ों को काटा गया और वहां पे उन इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया. ओके. देन अर्बनाइजेशन. इफ यू आस्क योर पेरेंट्स or your grandparents 30 to 40 years or 20 years or 10 years back, all this area was the city area. Okay. It was not so much populated, large. If you just, for one example, if we take our uh, near to our school, that field, around 10-20 years back, it was a whole playground. People used to come from far off places and they used to play over there. But day by day, as things got changed, government sold that land. One of the things that it was not being a forest area, पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे, तो ये बढ़िया चीज थी. बट एक ओपन एरिया था जहाँ पे लोग सुबह टहलते थे, बच्चे खेलते थे. बट एज द रिक्वायरमेंट, गांव से लोग शहरों में माइग्रेट करें तो अब उनको रहने के लिए जगह चाहिए. किराए पे कितने रह सकते, तो अपने अपना घर खरीदने के लिए प्लॉटिंग करेंगे. एंड नाउ वी हैव अ गुड नंबर ऑफ हाउसेस इन दैट ground which used to be a playground for many of the people. Okay. And many of you will be living in that area. So that is urbanization. शहरीकरण. ठीक है. गांव से लोग आकर के शहर में बसते जा रहे हैं और उसको एक्सपेंशन हो रहा है, उसका एक्सपेंड हो रहा है. ओके. देन जो क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, खेती बाड़ी के लिए लैंड क्लियर किया जाता है. वी वुड हैव हिस्ट्री अबाउट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. ओके. पहले एक जगह पे खेती बाड़ी करी, फिर वहां से दूसरी जगह गए, जब दूसरी जगह शिफ्ट हुए, सो दे क्लियर्ड द होल लैंड. आग लगा करके वहां पे सब जला दिया, उस जगह को एग्रीकल्चर पर्पस यूज किया. सो दैट वाज इन अर्लियर टाइम्स. नाउ आल्सो इट यूज्ड टू बी देयर. देन वी यूज वुड एज फ्यूल. तो अब अगर हम फ्यूल की तरह यूज करें तो हमें उसको चाहिए. अब कहाँ से चाहिए, तो पेड़ काटना पड़ेगा. ओके. देन using wood to make paper, furniture and other things. Then these are the various man-made causes, जो हम इंसान लोग के द्वारा ये cause करते हैं. But there are also deforestation also occurs due to natural things used to happen, like forest fire, earthquakes, severe droughts or floods. So these are the natural causes. Okay, fine. Now we will be understanding consequences of deforestation. कि अब जब deforestation हम करते हैं तो इसके consequence क्या है, इसके जो हमें नुकसान झेलने पड़ते हैं वो क्या है.
Deforestation has an adverse effect on biodiversity and needs to be checked immediately. Later on, to know what happens as a result of deforestation. तो deforestation के बहुत ही भयानक या बहुत ही डरावने इफेक्ट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में, और इस चीज को डिफोरेस्टेशन को तुरंत चेक करने की जरूरत होती है. So we already know that plants and animals depend on each other. A number of species of birds and animals live in a forest. It is their habitat. They depend on each other for food and other things. Destruction of forests has affected the food chain and destroyed the habitats of man in living organisms. Animals like lions and tigers have become much reduced in number because the forests in which they live have been destroyed. Remember, this is not the only reason for reduction in number of these animals. Another reason is their hunting by humans. तो भी हमें मालूम है कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या वी ह्यूमन बीइंग्स, वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पे आधारित हैं, और बहुत ही अच्छी संख्या में बहुत ही अलग अलग स्पीसीज के जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं और वो उनका एक घर है. नाउ वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने अलग अलग चीजों की वजह से. लेकिन जो ये डिस्ट्रक्शन हुआ है या डिफोरेस्टेशन हुआ है, इसने जो उनकी फूड चेन है या उनका जो एक नेचुरल हैबिटेट उनको मिला हुआ है उसको क्या करा है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया. जैसा कि हम मेनी टाइम्स वुड हैव हर्ड इन न्यूज कि गांव में तेंदुआ आ गया, बाघ आ गया, ये जानवर आ गया, वो जानवर आ गया. सो व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड क्लियरिंग द फॉरेस्ट, धीरे धीरे फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू किया, अब वो कहाँ जाएंगे? इन योर एरिया यू वुड हैव नोटिस्ड monkeys used to come. Where monkeys used to live on the trees. अब धीरे धीरे पेड़ काट देंगे, बेचारे कहाँ जा करके रहेंगे? तो they will be entering the human space जहाँ लोग रहते हैं. तो हमारे कुछ जानवर जैसे कि लायंस हो गए या टाइगर्स हो गए, तो इनका जो नंबर्स है वो बहुत ही कम हुआ है क्योंकि इनका जो एक हैबिटेट था फॉरेस्ट का उसको हमने बिगाड़ा है. सिर्फ यही एक कारण नहीं है, एक और कारण है कि हम इन जानवरों को क्या करते हैं, हंट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं इन जानवरों का. ओके, देन नेक्स्ट इज the level of carbon dioxide in the atmosphere increases on account of deforestation. तो जैसे जैसे हम डिफोरेस्टेशन करेंगे, we know that plants they consume carbon dioxide. वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर हमें प्रोवाइड करते हैं. तो जब हम ये चीज करते हैं, जब हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो पेड़ को काटने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा. जब ऐसा होगा, so there will be reduced number of trees required. The reduced number of trees required lesser carbon dioxide. तो कम पेड़ होंगे तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, वो एटमॉस्फेयर में रहेगी. तो जब वो एटमॉस्फेयर में रहेगी तो वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाएगी, जो कि हम बहुत ही अच्छे वर्ड के नाम से जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग. ओके, then deforestation leads to increase in temperature and pollution level on the earth. This disturbs the water cycle and reduces rainfall. The outcome is drought. तो जब ये टेम्परेचर बढ़ेगा या पॉल्यूशन लेवल जो अर्थ पे वो बढ़ेगा, तो उस वजह से क्या होगा कि जो अर्थ की वाटर साइकिल वो इफेक्ट होगी. और हमें पता है अगर वो इफेक्ट होगी तो जो रेनफॉल हमें मिल रहा है, जो रेनफॉल हमें होता है, उसमें कमी आएगी. और जब उसमें कमी आएगी तो ड्राउट बढ़ेंगे यानी कि सूखा बढ़ेगा. Then next is deforestation results in soil erosion. You have already learned in class 7 that trees prevent soil erosion. Roots of the trees by the soil particles, they hold it together, preventing them from blowing away by wind or water. Soil erosion removes the top layer of the soil that contains the fertile humus. Removal of top layer does make the soil less fertile, as the lower layers of the soil contain less humus. If this goes on, the fertile land, the fertile and gets converted into a desert.
The process of conversion of fertile land into a desert is called desertification. तो क्लास 7 में पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है कि जो पेड़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, लेकिन जब पेड़ ही कट जाएंगे तो रूट्स क्या कर पाएंगी, रूट्स रहेंगी ही नहीं। एंड इन दैट केस जो जब बारिश होती थी तो वो जो सॉइल को पकड़ के रखते थे कि वो बारिश में बह नहीं जाए, जो टॉप सॉइल है वो बह नहीं जाए। लेकिन अब जब वो पेड़ कट गए हैं, रूट्स है नहीं उनको होल्ड करने के लिए, तो धीरे धीरे बारिश से वो धुलेगी या विंड से वो धुलेगी, वो साफ होती जाएंगी, उड़ती जाएंगी। एंड व्हेन दिस टॉप लेयर गेट्स रिमूव, वी नो दैट इट्स सॉइल इरोजन, वो सॉइल इरोजन हो रहा है। तो ये जो टॉप लेयर चलेगी जो फर्टाइल थी, इसके बाद की जो लेयर आएगी विच इज लेस फर्टाइल, वो कम फर्टाइल, तो क्या होगा कि जो आपका एक फर्टाइल लैंड था वो धीरे धीरे लेस फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो एक कम उपजाऊ भूमि, वो कम उपजाऊ भूमि से बिल्कुल ही तरीके से उपजाऊ भूमि रही नहीं जाएगी। दैट मीन्स दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। So this whole process, the whole process of conversion of fertile land into a desert is called desertification. Okay. Then, as a result of deforestation, groundwater level also gets lower. The capacity of the soil to hold water is reduced. The movement of water from the soil surface into the ground slows down. In the absence of trees and the root system, water is not able to seep in soil. As a result, in rainy season, water gets just flows over the soil, bringing about floods. So again, the same thing you have studied in class 7. Infiltration, seeping of water. So when deforestation will be there, तो जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो भी कम होगा। क्यों? क्योंकि जो रूट्स की हेल्प से पहले पानी अर्थ के सोक कर लेते थे, एब्जॉर्ब कर लेते थे, अब वो चीज नहीं हो पाएगी। तो जब वो चीज नहीं हो पाएगी तो पानी क्या होगा, पानी सरफेस के ऊपर में फ्लो करेगा, और जो पानी फ्लो करेगा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, मोस्ट ऑफ द एरियाज में क्या होगा, फ्लड्स आएंगे। ओके, सो these above mentioned consequences of deforestation affect the population of organisms found in that area and the crops grown there. So ये जो हमने consequences 5-6 consequences बताए हैं, तो ये consequences क्या करते हैं, जो जो उस एरिया में organisms, चाहे वो plants हो, चाहे वो animals हो, चाहे वो human beings हो, उन सबको ही वो नुकसान पहुंचाता है, उन सबके लिए ही वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ जो उस एरिया में जो क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं उनको भी क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। ओके, फाइन। नाउ आंसरिंग डिटेल क्वेश्चन नंबर 3, गिव causes and consequences of deforestation. So I just made two tables here, but you can write one after the other also, no need to make the table. Causes of deforestation: construction of houses and industries, clearing land for agriculture purposes, using wood as fuel to make paper, furniture, and other things. Then there are natural reasons like forest fires, earthquakes, severe droughts, and floods. These are the causes of deforestation. Now, when causes of deforestation, we have consequences also. So, next is consequences of deforestation affecting food chain, destroying natural habitat of many living organisms, global warming, then drought, floods, desertification, and soil erosion. Okay, great. Now, answer detail question number 4. Explain how deforestation leads to. Then there are two parts. Part 2A is soil erosion and desertification, and part B is global warming. How deforestation leads to soil erosion and desertification, then global warming. So first one we will take. Deforestation results in soil erosion, as we know that trees prevent soil erosion by roots of trees binding the soil particles together, preventing them from blowing away by wind or water. Soil erosion removes the top layer of the soil that contains the fertile humus. Removal of top layer
does make the soil less fertile, as the lower layers of the soil contain less humus. If this goes on, the fertile land gets converted into a desert. The process of conversion of fertile land into a desert is called desertification. Okay, then second part about global warming, how deforestation leads to global warming. When trees are cut down, the burden of or allowed to rot, their stored carbon is released into the air as carbon dioxide. The level of carbon dioxide in the atmosphere increases on account of deforestation. We know that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Reduced number of trees require lesser carbon dioxide. So the level of this gas, which has carbon dioxide, has gone up in the atmosphere, resulting in global warming. Okay, fine.